Now let us discuss some important explanatory question from the previous lectures. Number one question is, what is equipotential surface? Okay, you can define it. Next is, list the two properties of equipotential surface. These questions are asked many times. What are the two properties of equipotential surface? Next question, why does two equipotential surface do not intersect with each other? Okay, everything I have given in the last previous lecture. Please go there and find the answers. Next question is that, what is the work done on equipotential surface? The work done on equipotential surface is always 0. Okay. Next is, what is the geometry of uh, equipotential surface due to a point charge? The geometry of equipotential surface is concentric spheres. Okay. Now next question is, which is a little bit confusing, which says that आपके पास एक आर्क है रेडियस, आई मीन एक स्फीयर का आर्क है, से ए टू बी इज एन आर्क, और इस रेडियस के सेंटर में है एक चार्ज क्यू. ओके, तो बताइए इस आर्क में वर्क डन क्या होगा? व्हाट इज द वर्क डन ऑन दिस आर्क, ओके, ऑफ स्फीयर, okay, of a sphere. At its center there is a charge, then the work done will be 0, because क्योंकि if you have this charge, then this one of this arc or this sphere around this charge will be counted as equipotential surface. So whenever you do a work on the arc of any sphere of which the charge is sitting at the center, the work done on the arc is always 0. This is little bit confusing one. Again मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास चार्ज है जो है स्फीयर के सेंटर में, और आपको दिया है आर्क छोटा सा, किसका आर्क? वो है आर्क है स्फीयर का, तो उस स्फीयर में, उस आर्क में वर्क डन कितना होगा? तो ये होगा 0. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, sketch the geometry of equipotential surface due to a dipole. उसमें क्या करना है? वो डायग्राम बनाना है आपको सिर्फ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, sketch the diagram of electric potential due to a system of two like charges. Okay, positive positive is like charges, negative negative is also like charges. Okay, for dipole also you have to draw the same kind of answer. Okay, it is very important question. Next is, what do you mean by polarization? Okay, next is, what is the net electric field inside? Okay, what is the net electric field inside a conductor? It is 0. Why? Okay, for the answer you just go to the polarization topic. Okay, and next is, why is electric field not 0 इनसाइड और डाइइलेक्ट्रिक? डाइइलेक्ट्रिक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 नहीं होगा? उसके लिए भी आपको जाना है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है. ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और देगा आपको क्वेश्चन, व्हाट आर द बिहेवियर्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर व्हेन पुट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? उसमें क्या होगा? पार्शियली पोलराइजेशन का बात आती है वहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक, और कंडक्टर में पूरा पोलराइजेशन. वो भी आपको मिल जाएगा पोलराइजेशन के चैप्टर टॉपिक में, लास्ट टॉपिक में. ओके, सो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.